Congratulations, Spencer. Here are the keys to your new home. Thank you so much, actually. Thank you You're so very much. welcome. It's Thank been a you. pleasure working with you, and I wish you all the best. If you would like to find a property that you would like to invest in, that's going to potentially give you a really good ROI, please come visit Metro Wall. And if you want to play safe, so this rental investment would be ideal. Shukriya and Namaste. दोस्तों इस वक्त हम लाउडन काउंटी के सबसे महंगे और सबसे साफ सुथरे इलाके एशबर्न वर्जीनिया में आ चुके हैं और जिस कम्युनिटी में हम घर खरीदने के लिए आए हैं उसका नाम है लिनार कम्युनिटी मेट्रो स्टेशन। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी यहाँ पर जो इंचार्ज हैं इस कम्युनिटी की एचली से, और एचली जो है हमें बेसिकली बताएंगी कि क्यों जो है ये ज़बरदस्त खूबसूरत एरिया और ये ज़बरदस्त कॉन्डोज जो हैं इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, और इन्वेस्टर्स जो हैं अगर यहाँ पर ख़रीदेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ये बुक कराने में। दूसरी इस कॉन्डो की जो ख़ास बात वो ये है कि अभी अगर आप ये बुक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ $15,000 देना पड़ेंगे। जून में ही आपको घर की डिलीवरी मिलेगी, तो हो सकता है जून में प्राइसेस और बढ़ जाएं, तो सीधा सीधा आपको फायदा है। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं एशली से और उससे पूछते हैं कि क्या बेनिफिट है एज एन इन्वेस्टर इन कॉन्डोज को खरीदने में। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। Hi Ashley, how are you? Hi, how are you, Mansur? Good, thank you so much. What kind of apartments are there, or what kind of condos are here, Mhm. and why? I mean, he should choose these condos. Okay, yep. Well, it's a pleasure meeting you, Emron. I'm so glad you made the time to come out today. So we offer what we call 2-over-2 condos. So it's a 4-level building. The first 2 floors are one home, and the 3rd and 4th is one home. So today we'll be talking about the first level, which is called the Terrera. The Terrera is just above 1,600 square feet. We're at 1,614. And then we have a couple options. You can choose engine unit or an interior unit. Okay, there's really no difference with the exception of you get a couple windows on the end unit. Our next deliveries would be June. So I can show you here on the map. We are currently located here. And then we have home site 807 for a reservation. And then we have 903 and 909. If you would prefer an interior unit, that would be delivered in June. Lennar requires a $15,000 deposit for the reservation. It's a non-binding agreement, so you could cancel at any moment and get a full refund of your deposit. If you decide to move forward with the purchase agreement, that deposit of $15,000 will transfer over to your purchase agreement. What kind of recreation activities will be there? Yeah, we'll have a pool and a fitness center, as well as the clubhouse that residents can rent out for events and stuff. We do have a wonderful park called Evermore Park in the community. This is actually taken care of by Loudoun County, so it's a public park. And then this area here is a future town center, which is currently the county is taking bids on each plot. We have the metro station here, which is Ashburn Station off of the Silver Line. All of the infrastructure is there. It's just not open at this moment. And so another great thing about this location is we're right off of the Greenway. So literally you can jump on that. We're 20 minutes from Tyson Center, which is really nice. And then 10 minutes from One Loudoun. We're close to grocery shopping, whether it's a Giant or Wegmans, Target. So it's a very centralized location, and you can get to most places within a 10 to 20 minute. So, what benefit he gets as an investor? So as an investor, you're purchasing in the community before the metro's opening up, before the town center's coming up. And so you're really getting pricing, like pre-metro pricing. And kind of what we've seen in other areas that have a metro station, if you get in prior to the metro opening up and all like the development of the town center going on, you really do get the best pricing, because as these metro opens, the town center becomes complete, there should be an increase in the value of your home. And actually, one of the questions so many of my clients ask me, like, what is the benefit of buying condo versus townhouse?
That's a great question. So with a condo, you don't worry about anything on the exterior. So it's really like a turnkey property. You come in, you only have to maintain from your walls in and windows and doors. So whenever your roof needs to be replaced or needs to be repaired, that is covered by the condo association. The siding, the gutters, all of the landscaping, the land. You don't have to worry about any of that. So it's really for people that don't want to do yard work or don't want to have a lot of maintenance, they would choose a condo. And especially for as an investment, you don't want to have to maintain the exterior of the home, right? So that actually takes kind of a little bit of pressure off of the investor. All right, Ashley, so in the last, what is the message for investors who's looking at you right now? So the message would be, if you would like to find a property that you would like to invest in, that's going to potentially give you a really good ROI, please come visit Metro Walk at Moorfield Station. You can reach me directly at 410-446-9319. I'd be happy to show you the model and show you what Lennar has to offer. Perfect. And what is your number to contact? Yes, so my number is 410-446-9319. And again, my name is Ashley Clark. Shukriya and Namaste. Congratulations, Spencer. You're the keys to your new home. Thank you so much, Ashley. Thank you You're so very much. welcome. It's been a pleasure working with you, and I wish you all the best. It's a pleasure working with you too. Thank you so you. much. दोस्तों, अब हमें घर की चाबी मिल चुकी है. ये देखिए, जबरदस्त किस्म का हमारा घर है. अब आपको घर अंदर से भी दिखाते हैं कैसा है. ये देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और इसको इंशाल्लाह ताला कुछ ही अरसे में इसको रेंट पे भी दे देंगे. हम खुद जो हैं लीजबर्ग में रहते हैं और वहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा घर है, लेकिन मार्केट देख के सोचा कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए. तो ये ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी ख़रीदी है, इसको रेंट पे देंगे, इक्विटी हमारी बनती रहेगी. 1649 स्क्वायर फीट है और नया घर की तो खुशबू ही अलग होती है. ज़बरदस्त किस्म के अप्लायंस लगे हुए हैं. देखें, लेटेस्ट फ्रिज है और ये ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाने वाला ओवन है, माइक्रोवेव, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है. तो दोस्तों, अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे दोस्त नादे अली से. नादे अली जो हैं वो सीनियर रिक्रूटर हैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में. तो नादे अली भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. तो बताइए, आप जो है यहाँ पर आज घर देखने के लिए आए हुए हैं, तो क्यों देख रहे हैं घर? आप तो अच्छे खासे रेंट वाले अपार्टमेंट में रहते हैं. रेंट दे के मसूद भाई, अभी जो हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, रेंट का कोई फायदा नहीं है आपका. एक तो इट्स जस्ट यू आर पेइंग फॉर द रूफ ऑन योर हेड. उसको आपकी कोई इक्विटी नहीं है, आपको कोई इसका लॉन्ग टर्म फायदा नहीं है. मेरी नज़र में सिर्फ ज़ाया है. इफ यू कैन बाय अ हाउस बीइंग एन ओनर, दैट्स ऑफ कोर्स जो आप, और ऑलमोस्ट वही कॉस्ट होती है जो मैंने देखा है. जो आप रेंट दे रहे होते हो उसमें ऑलमोस्ट couple of $100 का फर्क होएगा, बट दैट गोज टुवर्ड्स योर इक्विटी. आप उसमें आपका एसेट बन रहा है और वो ज़ाया नहीं हो रहे. और ऑफ कोर्स आपका घर, किस टाइप का घर देख रहे हैं? क्या आपकी रेंज है, बताइए. घर में अभी क्योंकि करंटली मैं रेंट कर रहा हूँ एज अ टाउन हाउस, 3 bedroom 3 bath. आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर सिमिलर, नॉट इंडिपेंडेंट बट टाउन हाउस. मेरी रेंज, आई नो करंट मार्केट की क्या सिचुएशन है, सो अराउंड 550, under 550 or 600, under absolutely max. And I know I can find something within this particular range, and I'm open for anywhere in Loudoun County. So yes. चलें दोस्तों, ये हमारे दोस्त इमरान भी यहाँ पर आए हुए हैं. इमरान लीजबर्ग वर्जीनिया में रहते हैं. ज़बरदस्त किस्म का इनका अपना घर है. सिक्योरिटी मैनेजर हैं एक बहुत बड़ी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी में. इमरान यहाँ पर आए हुए हैं अपार्टमेंट देखने के लिए, ताकि क्योंकि ही इज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सो इमरान, आप बताइए क्यों आप यहाँ पर आए हुए हैं और क्या चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट? व्हाई यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट राइट नाउ? क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत तो बहुत बढ़ी हुई है. मैंने तकरीबन
10 साल हो गए मुझे घर खरीदे हुए और मेरा अपना मतलब लीजबर्ग में है। अभी मतलब आई एम लुकिंग टू हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, तो वन वे इज टू गेट सम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, तो मैं देख रहा हूँ। तो लीजबर्ग और एच1 बहुत अच्छे एरिया हैं फ्रॉम रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो अगर एक या दो रेंटल प्रॉपर्टी में खरीद लूँ कोई और उनको डाल दूँ तो विच विल बी लाइक अ रियली गुड इनकम स्ट्रीम फॉर मी फॉर फ्यूचर एज वेल। तो इमरान भाई, हमें बड़ा डर लगता है कि भाई घर खरीदेंगे तो किराए पे कौन लेगा और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो जब आप दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अभी आपने खरीदी नहीं है, लेकिन क्या आपके माइंड में आपको लगता है कि रेंट पे इमीडिएटली चला जाएगा? भले इमीडिएटली ना भी जाए तो उससे पहले जो प्रॉब्लम है कि इधर क्योंकि रेंटर्स के बहुत हुकूक होते हैं, राइट्स होते हैं, राइट्स, और यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें हैंडल कर पाएँ लीगल इन लीगल वे। तो इरादा यही है कि ऐसी जगह पे लें जिधर प्रॉपर्टी मैनेजर्स हायर किए जा सकें या कंपनीज हायर की जाएं जो कि मैनेज करें, और यही बेसिक आइडिया है मेरा। मेरी रेंज है कि मतलब मे बी 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो जो कि बहुत आसानी से रेंट हो जाए, और 1 से या 2 अपार्टमेंट आई कैन अफोर्ड। तो आप तो बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी मैनेजर भी हैं और आपका स्टॉक्स भी आप बड़ा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपके हिसाब से आजकल के ज़माने में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ मेरे अंदाजे में अभी भी जो ब्लू चिप्स कंपनीज हैं इन स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आई कैन सी गूगल, एप्पल और ये इनोवेट करती ही रहेंगी। आजकल फेसबुक थोड़ा डाउन है बट होता है, लेकिन वो फिर से उठेगा। इन बड़ी कंपनीज को मतलब कोई मात नहीं दे सकता, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ तो दिस रेंटल इन्वेस्टमेंट वुड बी आइडियल।